another piece of breaking news coming in. Inputs coming in of a man named Kasmuddin Ansari was set fire to Deepak Soni, spraying petrol on him in Garhwa district of Jharkhand. So breaking inputs coming in from Jharkhand about a horrific case of burning. The young man's head and face were badly burnt in the process, and this is, it seems to be one in a series, the latest in a series of such incidents from Jharkhand. In this case, one man setting fire to another. Both of them have been identified. The victim has been identified as Deepak Soni, and the perpetrator has been identified as Kasmuddin Ansari. The incident is from Garhwa, has been reported from Garhwa in Jharkhand. And, well, you're seeing those visuals there of the horrific incident. It's the latest in a series of similar incidents of human beings being set ablaze from Jharkhand. This is an incident being reported from Garhwa in Jharkhand, where we can vaguely see one man burning alive another. Both the victim and the perpetrator, both of them have been identified. The victim has been identified as Deepak Soni, and the perpetrator has been identified as Kasmuddin Ansari. And Shehzad Poonawalla joining us on the phone line. Mr. Poonawalla, we are seeing another ghastly incident of burning. It's the latest in a series of similar such incidents from Jharkhand. What would you like to say about it? Is my voice audible? Is my Yes, voice sir. audible? Yeah. Well, this is not a coincidence. It is actually not a sayog, but a prayog. This kind of incidents that are taking place in Jharkhand show that today the JMM government is a MMM government, a government of minority appeasement, mafia and mining. And because of this, the law and order situation in Jharkhand has completely collapsed. You would remember that in Palamu, and I remember seeing this on your channel, how dozens of families of Mahadalit community were forced out by Islamist bigots. Now you are seeing an incident in Garhwa where Deepak Soni has been set ablaze by Kasmuddin Ansari. You have seen the incident of Ankita where she was set ablaze by Shahrukh. And the reason why these criminals feel emboldened to take the law and order into their hands is because they know that this is Hamari Sarkar. Nobody will do anything to us because of the minority appeasement politics. And therefore, they have a free run. And in fact, when the Jharkhand CM or his brother are asked about such incidents, they give answers like, "Aisi ghatnaएं hoti rehti hai," or they say that they were busy in undergarment shopping in Delhi. So this is the kind of attitude. This government is only interested in saving their government, their political seat, and in picnic mode. And therefore, the law and order situation has completely deteriorated. And this is what it has come down to. Well, sir, in this particular case, a man who both the victim as well as the victimizer have been identified. Doesn't that make it easy? Doesn't that make it easier for the authorities, the police force, to take action? The question is, in all these cases, in fact, the person responsible have been identified. The question is, why have they not been brought to book? And why, why are such incidents continuing? The reason why such incidents are continuing and the criminals feel particularly emboldened is because they feel that they have a license. The license in the name of minority appeasement, the license in the name of patronage to such criminal elements by the Jharkhand government has become an old story. And therefore, such elements, when they commit such crimes, they feel that they will not be taken to task or brought to justice because the government in power in Jharkhand has its priorities of appeasing a particular community, and therefore their action is not as strong as it should be. And that has been evident from the kind of incidents that are coming to the fore on a daily basis. Had there been strong action in Ankita's case or in cases before Ankita,
maybe the Ankita case would never have happened. The Palamu case would never have happened. Garhwa case would never have happened. So this is a complete capitulation to minority appeasement politics, because of which the law and order situation has deteriorated, and the mafias and the criminals feel that they have a free run in Jharkhand. And sir, when Hemant Soren was asked about the Ankita case and the cases that are happening back to back, similar such incidents, he said that such things happen in other places as well. Do you feel that there is also an attempt at perhaps evading responsibility and perhaps playing down the danger that people in the state are? You see, the entire focus of the Jharkhand government is only and only on saving its political power and in power games. And therefore, they have no priority or any focus towards ensuring the saving of Betis in Jharkhand, saving of the common man, saving of the law and order situation, saving of Dalits, saving of tribals. And therefore, today we are seeing a rise in crimes against these communities, against women, on the rise, and there is no action against criminals that is being taken, and that is only because the Jharkhand government has a priority of Aparadhi Bachao in the name of appeasement politics. Many thanks, Mr. Poonawalla, for joining us there and for sharing your thoughts with us. And so we're getting this shocking news of another in a series of burnings in Jharkhand. This time, the incident is being reported from Garhwa after the ghastly killing of Ankita, who was set ablaze by a youth whom she had scorned. We now see another case. This time, Kasmuddin Ansari douses a man with petrol. The victim identified as Deepak Soni, and his head was badly burnt. And well, it's terrible news coming in from Garhwa in Jharkhand. And the incident reports say that the person identified as Kasmuddin Ansari doused Deepak Soni with petrol in Garhwa in Jharkhand and set him ablaze. Now, Deepak Soni's head and face were badly burnt in this incident, and this is the latest in a series of such similar incidents of burning of one person setting ablaze to another. Earlier, we had seen the sad and tragic death of Ankita, the young girl who was set ablaze by a person whom she had scorned apparently. And the person has been identified as Shahrukh. In this case, it's Kasmuddin Ansari. And even as Jharkhand Chief Minister Hemant Soren seems to have no answers about the incidents. In today's case from Garhwa in Jharkhand, the youth's head and face were badly burnt. Deepak Soni, well, we are trying to get more details. It's still unclear whether he's still in hospital. What is his condition? And first there was the Dumka horror. We had seen how Ankita was... and there have been a series of such killings and murders of innocents. Young girls hanging from trees, and ghastly reports coming in. Even as, well, Chief Minister Hemant Soren seems to be silent absolutely on these issues. In the latest in a series of ghastly killings in Jharkhand, we have a report of a man being burnt alive by another. The victim has been identified as Deepak Soni. Deepak Soni had petrol doused on him, and he was burnt. He was set ablaze by Kasmuddin Ansari. Details are still awaited. And joining us now is Deepak Prakash, BJP Jharkhand, the chief of the BJP in Jharkhand, joining us on the phone line. Mr. Deepak, when we talk about, well, this is the latest in a series of ghastly killings. The message that's going out to people of the country here
is that Chief Minister Hemant Soren, उनके पास कोई जवाब नहीं है. What do you have to say? What is the BJP stand? What is the opposition doing about this? क्या रुख है opposition का, BJP का in the state of Jharkhand? देखिए, इस प्रकार के अमानवीय घटनाओं का अंबार बढ़ते चला जा रहा है. ये सब हो रहा है जिससे हेमंत सोरेन और कांग्रेस की सरकार झारखंड में है. और ये सरकार कोई पहली घटना नहीं है. लगातार इस प्रकार की घटनाओं का हर दिन इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं. मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जब से ये सरकार आई है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से जर्जर है. पूरी तरह से यह राज्य जंगल राज्य में स्थापित हो गया है. और राज्य की सरकार में जो बैठे हुए सत्ताधारी दल हैं, ये उसी का संरक्षण का ये कारण है. जब से ये सरकार आई है तब से तुष्टीकरण की राजनीति ने इस राज्य को बर्बाद करने का काम किया है. तुष्टीकरण की राजनीति के तहत जो सत्ताधारी दल है वो एक वर्ग को वोट बैंक बनाने का काम किया है. और वैसे वर्ग के जो वैसे असामाजिक तत्व है उनको आज राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण इस प्रकार की घटनाएं घट रही है. भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ लगातार संघर्ष कर रहा है. भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को सिमडेगा में इसी प्रकार से जला करके मारने का भी काम इस सरकार के कार्यकाल में हुआ है. और भारतीय जनता पार्टी आंदोलन लगातार कर रही है. भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के 414 कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे इस राज्य की सरकार ने किए हैं. हमारे जैसे कई कार्यकर्ताओं पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दायर किया गया है. लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के आतंक और इस प्रकार की जो सरकार की जो नीति है, नियत है और नेतृत्व में जो खोट है, उसके खिलाफ हम सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहे हैं. इसलिए राज्य की सरकार पूरी तरह से तुष्टीकरण की राजनीति का पोषक है और इसका मूल कारण है वोट बैंक. और ये राज्य की सरकार इस प्रकार की घटनाएं राज्य में घट रही है. और राज्य के जो मुखिया हेमंत सोरेन जी और कांग्रेस के जो नेता हैं, दोनों मिलकर के मौज मस्ती कराने के लगातार रायपुर जा रहे हैं, बड़े बड़े जहाजों में जा रहे हैं, वहां पर मौज मस्ती कर रहे हैं 5 सितारा होटल में. लेकिन यहाँ की जनता मर रही है, तबाह है, कराह रही है और झारखंड आज परेशान है और सरकार मस्त है. दीपक प्रकाश जी, पर ऑपोजिशन जैसे बीजेपी का कुछ दिन पहले हमने देखा कि ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस ने प्रोटेस्ट किया था और उस टाइम हेमंत सोरेन को जवाब देना पड़ा. बीजेपी का क्या रुख है, यही मेरा क्वेश्चन है. आप क्या करेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्शन? हमने सुना है कि आप लोग को बहुत प्रोसिक्यूशन किया जा रहा है, बहुत केसेस लागू किए जा रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर, पर फिर भी इस सिचुएशन में जैसे लगातार ऐसे इंसिडेंट्स आ रहे हैं, आपका एज अ बीजेपी चीफ आप क्या कहना चाहेंगे इन द सेंस ऑफ क्या एक्शन लेना चाहेंगे? देखिए, इस पर भारतीय जनता पार्टी का कड़ा रुख है. झारखंड प्रदेश की इकाई का हम सड़क में संघर्ष करेंगे. हम गोलबंद करेंगे ऐसे जिन पर अत्याचार हुआ है उनके परिवारों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है. उनके परिवारों के साथ खड़ी है पहले, और साथ साथ समाज को गोलबंद करके इस सरकार की जो कानून व्यवस्था ध्वस्त है, पस्त है, उसके खिलाफ हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं. हम संघर्ष को और तेज करेंगे और इस सरकार अगर कानून व्यवस्था पर अगर सुधार नहीं कर रही है जो, उसके खिलाफ हम और संघर्ष करेंगे. हम सड़क पे लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उस आंदोलन को और गति देंगे. भारतीय जनता पार्टी ऐसे सभी घटनाओं के खिलाफ हम संघर्ष कर रहे हैं. आज से नहीं, जब से सरकार जिस दिन से बनी है इस प्रकार की घटनाएं घटी है. रूपा तिर्की, हमारी बहन जैसी, सरीकी बहन जैसी एक कर्तव्यनिष्ठ दरोगा थी, उसको भी मार दिया गया है. इस प्रकार की कई घटनाएं पूरे झारखंड में जब से ये सरकार बनी है 5400 बहनों के साथ बलात्कार की घटना घटी. इसलिए अनाचार की घटना घटी है. हम सबके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं. इस प्रकार के तुष्टीकरण के राजनीति के कारण कई हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को. Many thanks, Deepak Prakash. Deepak Prakash, Jharkhand BJP chief, speaking with Republic. And even as a latest horror
of a man being set ablaze is being reported. Lomas joining us with all the details on this story. Lomas, it's still not clear. Many details. अभी भी बहुत details हमें पता नहीं है. We just know the two names and that one person. Was there a personal fight between the two? What happened? और detail में बताइए. मैं आपको बता दूं कि ये झारखंड के गढ़वा जिले का मामला है, जहां पर श्री गंगाधर नगर में ये घटना होती है और बताया जा रहा है कि ये पूरी घटना कल देर शाम की है, जहां पर दीपक सोनी नाम के व्यक्ति को पेट्रोल से जला दिया जाता है। बताया जा रहा है कि दो व्यक्ति आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं, जहां पर दीपक सोनी पहुंचते हैं, उनसे बात करते हैं कि क्यों वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन जब गुस्से में विशेष समुदाय के ऊपर एक आरोप भी लगाया जाता है कि विशेष समुदाय के लोगों ने इनके ऊपर पेट्रोल डाल करके आग लगा दी। आप देख सकते हैं जिस तरीके से अंकिता का मामला सामने निकल के आया था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक नया मामला सामने निकल के आया है, जहाँ पर विशेष समुदाय जो अभी तक मामले की जानकारी मिल पा रही है कि विशेष समुदाय के लोगों ने यहाँ पे दीपक सोनी नाम के जो युवक थे उनके ऊपर पेट्रोल डाल करके आग लगा दी। अभी फिलहाल दीपक सोनी को वहां के सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और साथ ही जो आरोपी है उनको पकड़ने में यहां पर जगह जगह नाकेबंदी और साथ ही इन्वेस्टिगेशन लगातार उनके द्वारा की जा रही है। Well, meanwhile, we were just speaking with the BJP chief of Jharkhand. And he seems to say that somehow Hemant Soren's government Hemant Soren की government ने अलग-अलग तरह के attempts किए हैं through various cases, केस लागू करके, कुछ लागू करके, केस दायर करके against BJP कार्यकर्ता to paralyze the opposition. क्या ये सच है? बिल्कुल, मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं। जिस तरीके से दुमका के जो विधायक थे बसंत सोरेन, उन्होंने एक बयान दिया था, उनसे पत्रकारों ने पूछा था कि दुमका में जिस तरीके से घटनाएं हुई उसके बाद आप दिल्ली गए तो उन्होंने कहा कि हम दिल्ली अंडर गारमेंट खरीदने के लिए गए। तो आपको इस तरीके से मालूम चल पाएगा कि किस तरीके से जो हेमंत सोरेन की सरकार है वो अपने आम लोगों के लिए क्या सोचती है। लगातार जो रेप की घटनाएं बढ़ रही है, तमाम जो इस तरह की घटनाएं लगातार वहाँ पे झारखंड में बढ़ती जा रही है, आम लोग परेशान है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो झारखंड की गवर्नमेंट है उस पर कई आरोप यहाँ पे बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, दूसरे आरोप भी लगते आ रहे हैं और लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। जी।